हेलो एवरीवन आम पेडागोजी पढ़ुले ये पूर्व आम थंडाइक पाभलम विषय रे किछि मु एमसीक्यू बनई जोटा कि परीक्षा रे आसिला भलिया प्रश्न थिला। आज मुझे भली किछि कोहलन थ्योरी को लेकिन मुझे क्वेश्चन बनाऊँगी जोटा कि मत लगुच क्वेश्चन गुड़िक ही इंपोर्टाट अच्छे ये क्वेश्चन मध्यम ही आम कोहलन पूरा थ्योरी को ही आम जापर। ओके तो आज मुझे 50टा ही क्वेश्चन डिस्कसन करी। आम आज फास्ट क्वेश्चन को आम जा तो आम फास्ट क्वेश्चन है कोहलर इज मेनली एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग। तो सी क्यों लर्निंग थ्योरी देते ऑप्शन देखा आम क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग इनसाइट लर्निंग ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो आम जानी कोहलर को लर्निंग थ्योरी देते ना आमर इनसाइट लर्निंग। तो सी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर कंडक्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनसाइट लर्निंग विथ को एनिमल डॉग्स कैट्स चिंपांजी पिजन। तो ये आम राइट आंसर आमर कौन हम ना आमर सी हम द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट इन लर्निंग मीन्स। ऑप्शन देखिए आम ग्रेजुअल लर्निंग बाय रिपीटेशन सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग लर्निंग थ्रो पनिशमेंट। तो लर्निंग थ्रो पनिशमेंट ये गोटे नेगेटिव बताऊँगी तो यहाँ भी आम आंसर ही हेनी। तो आंसर कौटा हम the concept of insight in learning means a sudden understanding of a solution. Okay तो B हम the right answer. Okay next question जी ऑन बाय एटा कहा द्वारा होता है जो चिंपांजी को लेकर आमर चिंपांजी स्टिक बानाना एटा कहा द्वारा एक्सपेरिमेंट होता पाभलव थर्नडाइक कोहलर स्किनर कहा द्वारा होता ना यहाँ आमर कोहलर द्वारा होता। तो ऑप्शन सी हूँ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहलर इनसाइट लर्निंग अकर्स व्हेन द लर्नर मेमोराइज स्टेप्स द लर्नर कनेक्ट एक्सपीरियंस सडनली द लर्नर इज पनिश्ड फॉर मिस्टेक्स द लर्नर इज फोर्स टू रिपीट। आम जानते सब नेगेटिव गुड़ा भी माइनस जो रिपीट फोर्स करें तो मिस्टेक पनिशमेंट करवा मेमोराइजिंग करिया ये सब हूँ नेगेटिव। तो लर्नर कनेक्ट एक्सपीरियंस सडनली तो ये हम गोटे राइट आंसर। ओके इनसाइट लर्निंग जोटा कि आमर सहित बी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोहलर्स थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग प्रोडक्टिव थिंकिंग और डी ऑप्शन हूँ मेकानिकल लर्निंग। तो आम राइट आंसर कौन हम ना कोहलर्स थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए गोटे कौन गोटे ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग प्रोडक्टिव थिंकिंग ना आमर हूँ मेकानिकल लर्निंग। तो ये हूँ कौन गोटे ना प्रोडक्टिव थिंकिंग। तो यार राइट आंसर कौन आमर सी हम द राइट आंसर प्रोडक्टिव थिंकिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ इनसाइट लर्निंग। ऑप्शन स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस सडन ग्रास्प ऑफ द सॉल्यूशन रेनफोर्समेंट ओनली कंटिन्यूअस रिपीटेशन। तो यहाँ कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ इनसाइट लर्निंग तो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस ना सडन ग्रास्प ऑफ द सॉल्यूशन रेनफोर्समेंट ओनली कंटिन्यूअस रिपीटेशन। तो ऑप्शन देखिले आम राइट आंसर कौन हम तो बी हम आम द राइट आंसर सडन ग्रास्प ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर्स एक्सपेरिमेंट वेयर पार्ट ऑफ व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म। तो ये राइट आंसर कौन हम ना कोहलर्स एक्सपेरिमेंट वेयर पार्ट ऑफ व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी गेस्टाल्ट। ओके तो राइट आंसर हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इनसाइट लर्निंग। ऑप्शन देखिए इट इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर बी ऑप्शन इट रिजल्ट्स इन सडन सॉल्यूशन इट यूजेस प्रीवियस एक्सपीरियंस इट इन्वॉल्व्स परसिपिशन ऑफ रिलेशनशिप। It involves a perception of relationships. What is not true? It आमर ए हम द राइट आंसर इट इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग इनसाइट लर्निंग रे नहीं। तो ओके तो यहाँ ही भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन इन एजुकेशनल प्रैक्टिस कोहलर्स थ्योरी सजेस्ट लर्निंग शुड बी रोट मेमोराइजेशन लर्नर्स शुड डिस्कवर रिलेशंस themselves
पनिशमेंट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, रिपिटेशन इज द ओनली वे टू लर्न। तो ये आमर जानवा कौन इन एजुकेशनल प्रैक्टिस कोहलर्स थ्योरी सजेस्ट, तो कोहलर थ्योरी कोटा सजेस्ट करे भितर लर्निंग शुड बी रोट मेमोराइजेशन, तो रोट ऊपर तो से मना करती लर्नर्स शुड डिस्कवर रिलेशंस देमसेल्व्स, तो यहाँ ही आमर राइट आंसर बोली लगुच। सी देखिए हमें पनिशमेंट इज नेसेसरी, तो पनिशमेंट तो गोटे नेगेटिव को बुझेला, रिपिटेशन इज द ओनली वे, रिपिटेशन इज द ओनली वन वे जोटा कि कहीदेले भी ये भी गोटे नेगेटिव, तो बी हूँ द राइट आंसर। ओके, लर्नर्स शुड टू डिस्कवर रिलेशंस देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइट लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, एनफोर्स्ड लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, तो इनसाइट लर्निंग इज ऑल्सो लर्न cognitive learning. Okay, B have the right answer. Animal did Köhler famously study on Tenerife Island? Dogs, cat, chimpanzee, monkey. तो राइट आंसर कौन हम ना आमर को लेकिन आमर कोहलर एक्सपेरिमेंट करथिले ना चिंपांजी को लेकिन करथिले, तो सी हो आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर्स थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ व्हिच साइकोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर्स थ्योरी इज पार्ट ऑफ व्हिच साइकोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, गेस्टाल्ट एंड साइको एनालिटिक, तो ये आंसर कौन हम ना आमर को थ्योरी ना आमर हूँ सी गेस्टाल्ट। ओके, सी हम द राइट आंसर। कोहलर्स थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइट लर्निंग अकर्स थ्रू सडन परसिपिशन, ग्रेजुअल ट्रायल, पनिशमेंट, रिपिटेशन, तो राइट आंसर आमर कौन हम ना ए हूँ द राइट आंसर। इनसाइट लर्निंग अकर्स थ्रू सडन परसिपिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explains insight learning? Learning by accident, learning by sudden understanding, learning by reinforcement, learning by imitation, तो यार कौन हम राइट आंसर ना आमर लर्निंग माने कोटा बेस्ट एक्सप्लेन कर इनसाइट लर्निंग को ना लर्निंग बाय सडन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ ही हूँ आमर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फोकस ऑफ कोहलर्स एक्सपेरिमेंट वाज टू स्टडी कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, इनसाइट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी रिटेंशन आउ रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेस, तो ये कौन हम राइट आंसर ना आमर मेन फोकस कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट अच्छे कोटा उपर मेन फोकस करे इनसाइट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये राइट आंसर हम आमर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट लर्निंग? ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, सडन सॉल्यूशन, एक्सटर्नल एनफोर्समेंट ओनली, मैकेनिकल रिपिटेशन, तो ये कौन हम आंसर ना आमर जोटा कि इनसाइट लर्निंग को बेसी फोकस कर कौन ना सडन सॉल्यूशन, तो बी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर्स वर्क emphasized the importance of trial and error, understanding relationship, reinforcement only, punishment. Kohlers work emphasized the importance of understanding relationship. B is the right answer. Physical repetition, reward, तो राइट आंसर आमर कौन हम तो बी हम द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर्स एक्सपेरिमेंट showed that chimpanzee failed to solve problems suddenly, learned only through trial and error, needed rewards, तो राइट आंसर कौन हम ना कोहलर्स एक्सपेरिमेंट showed that chimpanzee solved problem suddenly, तो राइट आंसर हम आमर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, insight differs from trial and error learning because it is slower, it is gradual, it is sudden and cognitive, it uses punishment, तो इनसाइट डिफर्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर लर्निंग बिकज एटा कौन ना एटा होची इट इज सडन एंड कॉग्निटिव, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर कंक्लूड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मैकेनिकल, इनसाइटफुल, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर यार आंसर कौन हम ना Kohler conclude that problem solving is insightful, the B is the right answer. Next question, Gestalt psychology focuses on parts only, whole perception, random events, reinforcement, तो यार राइट आंसर कौन हम ना Gestalt psychology focuses on whole perception. ओके, तो B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर्स रिसर्च लोकेशन वाज जर्मनी, स्पेन, यूएसए, फ्रांस, तो राइट आंसर कौन हम ना कोहलर कौटी रिसर्च करथिले ना स्पेन रे करथिले, तो बी इज द राइट आंसर।
Next question, which of these is an example of insight learning? Memorizing a list, suddenly finding a solution to a puzzle, repeating a task, learning by punishment. तो राइट आंसर कौन होगा ना which of these is an example of insight learning? एथर insight learning कोटा होची ना suddenly finding a solution to a puzzle, that is a insight learning. Okay. Next question, the term productive thinking is associated with Köhler, Skinner, Thorndike, Pavlov. एटा हो जोड़े important question. The term productive thinking ये कहा द्वारा हेतिला ना एटा कोहलर को द्वारा होइतिला, तो A is the right answer. Next question, Köhler's experiments demonstrated that animals could do only imitate use insight to solve problems, launched by reward only, learn by punishment. The right answer कौन होगा? Köhler's experiments demonstrated that animals could use insight to solve problems. So B is the right answer. Next question, insight learning emphasizes external reinforcement, sudden mental restructuring, सडन मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग, ट्रायल रेपिटेशन, मेकानिकल रेस्पॉन्सेस. तो यार राइट आंसर कौन हम? इनसाइट लर्निंग एम्फासाइज सडन मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर इनसाइट लर्निंग? पावलोव, कोहलर, स्किनर आउ आमर कि रहिले ना आमर थॉर्नडाइक. तो ये राइट आंसर कौन हम ना आमर इनसाइट लर्निंग रे आमर किए आसिले कोहलर. तो बी इज द राइट आंसर. Next question, which psychologist is known for insight learning? Pavlov, Köhler, Skinner. तो राइट आंसर कौन हम ना कोहलर. ओके, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an educational implication of Köhler's theory? Rote memorization, encouraging problem solving skills, reward for repetition, punishment for mistakes. तो which is an educational implication of Köhler's theory? राइट आंसर कौन हम ना encouraging problem solving skills. B is the right answer. Okay, next question. Next question, insight learning is often contrasted with operant conditioning, trial and error learning, classical conditioning, all of the above. तो right answer कौन? तो insight learning is often contrast trial and error learning. B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा, ए की फीचर ऑफ इनसाइट लर्निंग इज ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज. बी देखिए सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मेकानिकल प्रैक्टिस, एक्सटर्नल रिवॉर्ड. तो आमर तो बी इज द राइट आंसर, सडन रियलाइज ऑफ अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, Köhler's insight theory applies mainly to human only, animals only, both human and animals, plants. तो C होगा the right answer, both human and animals. Köhler's insight theory applies mainly to both human and animals. Next question, which of the following demonstrate insight in animals? Random attempts, using tools to reach food, avoiding punishment, repeating learned action. तो राइट आंसर कौन हम? which of the following demonstrate insight in animals? तो ये हम कौन? using tools to reach food. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ Köhler's इनसाइट थ्योरी. तो ऑप्शन रे केउंटा गोटे कोहलर का इनसाइट थ्योरी नुहे. ऑप्शन तो आमर ऑप्शन कौन? मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग, ट्रायल एंड एरर ओनली, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, सडन परसिपिशन. तो राइट आंसर कौन हम? तो यार राइट आंसर हो ट्रायल एंड एरर ओनली. एटा ही आमर कौन? एटा ही आमर नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Köhler worked primarily during which period? Early 20th century, 19th century, mid 20th century, 21st century. तो early 20th century राइट आंसर हम आमर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which learning involves a sudden understanding of a relationships? Insight learning, operant conditioning, classical conditioning, reinforcement learning. तो राइट आंसर कौन हम ना आमर which learning involves sudden understanding of a relationship. ये हूँ आमर insight learning. A is the right answer. ओके, ए आमर हम right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Köhler's chimpanzee used to what to get banana? Stick and boxes, food pelts, liver, button. एक कौन हम? इथर राइट आंसर कौन हम ना Köhler's chimpanzee used to what to get banana, stick and boxes. तो ए इज द राइट आंसर. स्टिक और बॉक्स द्वारा से कौन बनाना आनी पड़ता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आमे.
Next question, the main contribution of a Köhler is operant conditioning, insight learning, classical conditioning, trial and error only. The main contribution of a Köhler is the insight of a learning. Okay, insight learning. Next question. Which method did Köhler reject in problem solving? Insight, trial and error, mental restructuring, productive thinking. तो ये से कोटा को ही रिजेक्ट करते आम जानते जे इनसाइट अच्छे बट ट्रायल एंड एरर को से रिजेक्ट करते बी इज द राइट आंसर. Next question, Köhler's theory influence education by encouraging rote learning, promoting understanding, focusing on punishment, reward based repetition. तो राइट आंसर कौन हम ना Köhler's theory influenced education by हमारा कौन ना promoting understanding. B is the right answer. Next question, insight learning is sometimes called cognitive learning. Insight learning is sometimes called cognitive learning. So A is the right answer. Okay, next question jiba. Next question, which of the following shows insight learning? Sudden solution, repeated errors, reward based response, trial repetition. तो which of the following shows insight learning? एटा कौन गोटे ना sudden solution. Okay, next आंसर आमर होची आमर A, sudden solution. Next question जिबा. Next question, insight learning helps in memorization, problem solving, conditioning, reflex action. The right answer कौन होबा ना insight learning helps in problem solving. B is the right answer. Next question, Köhler observed that problem solving requires random trials, perception of relationships, reward only, punishment only. The right answer कौन होबा आमर? The right answer होबा कौन ना perception of a relationship. Next question, which type of thinking is emphasized in insight learning? Productive thinking, mechanical thinking, conditioned thinking. The right answer आमर कौन होबा? तो राइट आंसर हम कौन ना प्रोडक्टिव थिंकिंग. ओके, द राइट आंसर हम ए. तो व्हिच टाइप ऑफ थिंकिंग इज एम्फासाइज्ड इन इनसाइट लर्निंग? राइट आंसर प्रोडक्टिव थिंकिंग. ओके, तो आज क्लास जदि भल लगी था निहाती भाव में लाइक शेयर करेंगे. नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ किछि लर्निंग थ्योरी को जीवा, किछि आमे थ्योरिस्ट विषय रे आमे पढ़िबा. ओके, जदि क्लास भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे. ओके, थैंक यू.